Jay, Darshan, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So, ladies and gentlemen, can we all unmute and welcome Jay and Darshan Shah? Hi Jay. Good morning. Welcome Jay. Hi sir. Darshan. Welcome. Morning Jay. Welcome. Hi. Good morning. Good morning, everyone. It's Welcome, Ji. wonderful to see some very familiar faces as well. Thank you for having us. I saw Ankit, who was in my FMB batch. I saw Ankit Kedia, who was with me in BMP. Wonderful to Hi, see Jay. some old faces. Hi. Good to see you. Very nice. Very nice. Just 1 second. Jay and Darshan, you'll have to just unmute. Just 1 second. Just 1 second. Jay, Darshan, can you unmute once? Yes, sir. We are here. Yeah. Okay, so Jay and Darshan have an amazing story to tell. They have an amazing story to tell. Now, both of them did their BMP, then they did their ASP. I have invited them today only regarding the Golden Circle Rocket Client Rocket product. So I wanted them to come and share specifically on Rocket Client Rocket product, Golden Circle. So Jay, why don't you share with us what's your business, both of you? What were you doing earlier in terms of Rocket Client, Rocket products, or what were you not doing? And then how did that change? What did you start doing and what were the results you got? Sure, sir. I'll just start and then Darshan will also add to this. So, Ankit Agarwal, who was in my FMB, he knows. And then in 2015, Darshan and I moved out of my father's business and we set up a new firm altogether. So, sir, तभी तो कोई rocket customer, rocket client ऐसा तो कुछ था ही नहीं at that time. मतलब जो customer जो order दे सके, जो product का दे सके is what we were taking on board. And then in 2020 is when when Darshan joined BMP. I did it in 2021. That time we were at around 4 crores. And this last March ending, we touched 19 crores. And very few things we did, जिससे हमको बहुत ही अच्छे results मिले, and that was particularly like you sir said. So we started doing 80-20 in terms of our customers. We started realizing at the end of the day, we are a manufacturing organization. अगर मुझे अगर revenue चाहिए, तो मुझे capacity डालनी पड़ेगी, capacity के लिए investment लगेगा, and वो chicken and egg वो हमेशा होते रहता. And then Rahul sir had said one line during the 4-day program, which I'll never forget. He said, I promise you, you will double your profits without adding a single customer. And that for me was a little bit of, everybody has a notion about people from Delhi. And immediately that went up. I said, okay, this, has to be seen. And that is when we started doing 80-20. So we started prioritizing our customers based on our needs and requirements. And we said, even if the customer doesn't fit our profile, we created a customer profile. And हमने decide किया कि अगर वो customer profile में वो नहीं fit होते हैं, so we will not work with, even if we have spare capacity. So the other thing that जो sir ने बहुत अच्छे से हमको change करवाया है, that as a manufacturing organization, we inherently always feel कि वो machine 24 घंटे चलना चाहिए. अगर वो मशीन 24 घंटा नहीं चला, आपका वर्कर वो 9 घंटा नहीं काम किया, तो उसका मतलब है कि you are a failure. So to change that mindset for us was very, very easy. And we started doing that. Even if we had spare capacity, we started refusing customers because they did not fit our customer profile. और फिर मैंने और दर्शन ने डिसाइड किया कि यार हम पूरे साल में एक ही कस्टमर ऐड करेंगे. हमको 5 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 15 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए. We'll add one customer, and that customer we will yearn for. पूरा साल मेहनत करेंगे वो एक customer ढूंढने के लिए who is an absolute perfect customer fit in terms of the customer profile. And we kept doing that. So every year we do 80-20. So usme one, it keeps refining, the sort of customers we have today. And we started telling our customers very clearly, we compete on value. We don't compete on price. आप अगर प्राइस के लिए हमारे पास आए हो, तो we are not the ideal partner for you. So value is what we provide. We manufacture rubber components. I'm sorry I didn't mention that earlier. We manufacture molded rubber components. We are a highly tailor-made,
highly engineering driven organization. No two customers ever ask for the same product. हर customer अपनी खुद का problem लेके आता है, size, dimensions, materials, and based on that we give them solutions. So no two customer, there's nothing that we sell off the shelf. Everything that we sell is based on very specific molds. There is an R&D division to formulate the material. So that is what we pretty much do. We derive about 70% of our revenues from export. And overall, today, 95% of our business comes from multinationals, India as well as global. And Darshan is, he's very analytical. He has a sharp mind in terms of systems and processes, and he really, fortified our systems and processes from what we learned through our BMP and ASP, which is why we've been able to grow the way we are. Darshan, you want to add a couple of things? Yeah, with regards to sales, certain things. So how to identify that ideal customer? What we figured out is कि कोई भी customer है, अगर हम उनको onboard कर रहे हैं और वो अगर हमारा time या limited resources capture कर रहे हैं, generally owner driven business सबसे limited resource होता है हमारा time. And because we are into engineering services, we said, okay, there's no harm in us investing our time into a customer as long as we get the value and the business out of it in profitable business. Like Jay rightly said, हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है, inquiry comes that why are you looking at an alternative? Is this a new product or is this something you're buying? And if you're buying this, then why have you come to us? And if the guys, Your voice is cracking up a bit. okay, Darshan, yeah, sorry. ठीक है sir. Yeah, is this better? Much better. So, Yeah. So we saw that, okay, which is the customer जिसको time देने के बाद we will get valuable business and profitable business. Let's work only with those kind of clients. Because if R&D or सब time invest करने के बाद we are not getting profitable sales, so it is meaningless. So we identified कि, okay, export driven customers who are asking and who are coming and asking questions. Do you have this certification? Do you have these approvals? And once you work hard behind them, then you get business for 4, 5, 6 years together. So that is the way that we started building our pipeline. Recently, we did a very detailed analysis. Sir has shared a lot of sheets. कि business growth in terms of revenue तो एक part है, but volume में कितना हुआ? How many more pieces did we sell? Yeah, how much more kgs of raw material did we convert? And you guys will not believe it. We were also very surprised with the results. The 4 times growth of business that we have had has actually, the number of units that we've produced has reduced. So you can imagine how much less operational capacity I'm using. क्या कह रहे हो कि आप कम माल बना रहे हो अब? Correct, sir. We are producing less number of pieces while doing 4 times more business in terms of value. Wow. So that's something. Yeah, so we are still working on these things. Now we are doing that same thing in terms of raw material also. कि भाई raw material conversion का rate बढ़ा, या is the growth coming from things that we are driving or is it market driven? But going extremely deep into working with the right customer. This has turned out to be a blessing in disguise for us. Working with companies that have the same value system as us. अगर हम सिर्फ प्राइस के बारे में हाफ करते रहेंगे तो प्राइस का तो वो टीओसी में भी है ना, एक लिमिटेशन है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इन्वेंट्री 0 तक जा सकता है, बट थ्रूपुट इंफिनिटी तक जा सकता है. सो वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन करो. थ्रूपुट इंफिनिटी तक जा सकता है. एक मिनट. थ्रूपुट इंफिनिटी तक जा सकता है. थ्रूपुट इंफिनिटी तक जा सकता है, ये एक्सप्लेन कर दो जरा. सर, कोई भी कंपनी के अंदर मतलब टीओसी प्रिंसिपल्स में 3 ही नंबर होते हैं: थ्रूपुट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इन्वेंट्री. ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इन्वेंट्री यू वांट टू कीप द सेम एज अ परसेंटेज और ब्रिंग इट डाउन, बट वो 0 तक जा सकता है ना. कंपनी बंद कर देंगे तो 0 हो जाएगा. थ्रूपुट कैन गो टिल इन्फिनिटी. टुमारो आपने एप्पल का एग्जांपल दिया, मतलब व्हाई नॉट, मे बी somebody sitting in this room can become the next Apple. So there is no limit to how much we can increase our business if we focus on profitable sale. So our focus has been constantly on throughput.
And as long as operating expense and inventory is in control, हम उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. In the sense that थ्रूपुट थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इन सिंपल टर्म्स, क्योंकि जीपीएनपी है, थ्रूपुट क्या होता है? sales minus cost of goods sold is throughput. जो भी हमारा रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर पीस को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, जीपी होता है, जो जिसको हम जीपी कहते हैं. हाँ सर, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट नॉट जस्ट रॉ मटेरियल. हम उसमें वी आर एबल टू डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो. सो एनीथिंग दैट वी कैन एट्रीब्यूट कि भाई ये पीस बनाने में कितना हमको कॉस्ट लगा, वो माइनस करके इज व्हाट वी गेट एज थ्रूपुट. Very good. Sorry, please carry on. And then we just started going after the high value clients. So often, I think last time also when we met in Bombay, a lot of people kept saying that, sir, but my price command hi nahi kar sakta. And for us, that was such a fundamental mindset difference, because we realized that there is nothing like a high price. There is only low value. You can never charge a high price. You can provide low value to your customer. You cannot provide high price to your customer. नहीं समझाओ, फिर से समझाओ. Explain this. सर मर्सिडीज में भी 4 पहिए हैं, आपके मारुति 800 में भी 4 पहिए हैं. भाई all of them seat 4 people or 5 people. They all have an engine, a steering wheel. Why does one charge 60, 70, 80 lakh rupees? Why does the other why does the Maruti never go beyond 10 lakhs or 15 lakhs? It's because of the perceived value of that product. So if you are serving that particular need, the customer will come to you repeatedly again and again. Like Miss Sangeeta Bhutani also mentioned, she has somebody as big as the Sheikh of Dubai coming down, because probably he's seen that there is some need that she can fulfill. So we realize that very, very clearly that we cannot work for the masses. हम मतलब सबको हम सर्व नहीं कर पाते. We are a fine dining restaurant. We come and our customers tell us their taste preferences, how much time they have for that meal, and we curate that entire menu, our kitchen, everything only to serve that one customer wholly and solely. And that has given us monumental returns in a good way, in a very humble way. I'm saying that, but it's not that I'm charging 2,000 rupees for something that costs 2 rupees. The customer often still comes to us when they have, because today we are looked as import substitutes. We are not competing with China. We are not competing with Taiwan. We today sell ourselves as their local supplier. So Darshan and I literally came back on Wednesday from Belgium. We had a discussion with the company that will, if that one order just breaks through, we've been negotiating for 6 months, it is 3x of our current revenue. And they have been behind us, do this, do that, do this, do that. And we've been going back and forth, because they see the value in what we are providing. So one, of course, you have to clearly define what is it that you can do in terms of your systems, processes. Customers today want on-time delivery, consistent quality. Everything else is bonus. अगर आप कुछ भी और आपके सेल्स में बोल रहे हो, तो वो कस्टमर को उसका कोई वैल्यू नहीं. In the last, मतलब जब से मेरा ASP खत्म हुआ है, sir and everybody, मतलब in my organization is like, I'm single, I'm yet to be married, so I'm the one who keeps going and doing all the sales trips and everything. I must have taken 6-7 trips, must have met 50 customers. Not one has told us that, okay, Mr. Shah, we are very happy with our current suppliers. There's nothing that we need from you. When I tell them about our delivery through COVID, and we took certain very important decisions because of what we learned through ASP. For example, one of the things that we did when we started seeing, I'm sure आपके भी industry में prices और वो सब बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे. हमारे rubber industry में भी there was a phase when prices went up by 300-400% within a span of 2 months. As soon as we started seeing that trend, we called up our top 10 customers. We asked them, sir, do you have a forecast? They said yes. We went beyond our call of duty. We booked that material for 1 year. हमने वो material खरीद लिया हमारे पैसे से. Today that customer is giving us 100% of their requirements, even though in engineering it's usually dual sourcing. Because the Siemens will be like, boss, तुम हर केस रबर हो, मैं तो Siemens हूँ. अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी production line पूरी ठप हो जाएगी. But today we are getting 100% of the orders from our customers because we have consistently proven them right. So one is obviously you have to change the mindset of. The one thing you said was remarkable. You said there is nothing called
a price. There is only low There's value. nothing like a high price. Sir. There's nothing known as a high price. A lot of times we are ashamed of charging something more because we are like, अरे यार पूरा गांव 20% मार्जिन पे दे रहा है, आप 100% कैसे लगा सकते हो? आपको शर्म आ रही है. You're just ashamed to, charge that sort of a price. But it's not the product alone that you are selling. One, you have to understand that. And of course, it's very industry specific. We are a very small company. I can't speak for everybody. But from where we are, and if anybody can relate with us, what I mean to say is that in our industry, there is nothing known as a high price. You can only provide low value. There is nothing like a high price. Don't you think this is valid for everybody? This is. I mean, absolutely, sir. Absolutely. Sir, एक example देता हूँ. मतलब these kind of examples are all around us. Everybody knows a heart stent, right? Or a shaving blade. What is the raw material cost in a shaving blade or a stent? And how much do we buy it for? So, I mean, even with regards to something as simple as metal machining, you can choose your own playing field and say, okay, this is what I'm going to do, and I'm going to be the best at it. It will take time and we'll have to build infrastructure around it. But we can choose to be exceptional at whichever area we want to work with and say, I'm going to dominate this. Another example I'd like to share is I asked one of our clients. So we have, like Jay said, really big customers. So I asked one of them, why do you choose to work with us? You are such a big company, you will point a finger and a vendor will line up behind you. But why do you choose to work with Harkesh Raval? And his surprising answer was, we choose to work with you because of the level of promptness and service that you give us. If I work with a bigger company, I know that they are much bigger, but they don't value my business as much as you do. And then we built a robust infrastructure behind that to make sure that development hai, service hai, it has to be quick and immediate. Product की बात ही नहीं की sir उन्होंने. Darshan was purely only said about service and prompt. Correct. So now my competition is 500, 1000 times bigger than me, but they cannot provide the service that we can provide because we are more nimble. Wow, what a statement. मजे आ गए. तो हम इसकी जो strategy होती है वो कहते हैं service as a product. Yeah. Wow, मजे आ गए. Really amazing. So your competition is like 100, 500 times bigger than you, but because of the service you provide in a market which is highly competitive and a client who can demand any vendor, you manage to pull it off. Absolutely, sir. That is our strength, no? Because here the decision makers are Jay and me. There, if a sales guy gets a feedback that I want quicker service, वो बेचारा कुछ थोड़ी कर सकता है उतनी बड़ी कंपनी में system process change करने के लिए कि यार ये customer को fast service दो. It doesn't work. So, what can we do which the competition can't do, and then dominate that? So somebody is asked on the chat that can you explain value? I would say value is simply something that the customer is demanding and willing to pay a premium for. That is simply value. And it is difficult to do, which your competition can't copy. So it will take time thinking, figuring things out. But I mean, there are examples all around us. Look at Sir, इतना simple सा example. Frames के raw material क्या होता है? Plastic का बना हुआ होता है. हम कितना पैसा देते हैं ये frame का? So, I mean, if we start searching, we will find something. The other common theme we always hear is that, sir, our market is saturated. And we also serve very few products in few industries. And trust you me, it is not that the market is saturated. It is just that we have a shitty offer. Very nice. We want to believe that your market is saturated. We are for whoever is from Bombay, you go to the Lokhandwala, the steel market in Bombay. There are 4,000 shops. 95% of them are selling Tata Steel and some other, I think Jindal Steel. उसमें से कम एक डजन मेरे दोस्त हैं, आधे हमारे FME में है. हर साल 50 लाख रुपए खर्च करते हैं फॉरेन ट्रिप्स पे जाने के लिए. सब लोग का साउथ बॉम्बे में घर है. Everybody's stomachs are full. So this idea of competition, this idea that the market is saturated, this idea that this is what the price the market is commanding is all our conditioning of years. And we started realizing that, okay, there are certain things we can do exceedingly well और हमको फिर बस वही करना है.
फिर कल जाके हमको कोई 10 करोड़ का भी ऑर्डर देगा, बट इफ इट डज नॉट फिट माय प्रोफाइल वी विल नॉट डू। वो 6 महीना अगर कैपेसिटी हमारी खाली रहेगी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज देन वी आर एबल टू सर्व आवर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स इवन फास्टर। सो अगेन दैट इज अनदर माइंडसेट शिफ्ट दैट यू नीड टू हैव। हमको लगता है कि अगर जब तक वो मशीन 24 घंटा नहीं चलेगी तब तक मतलब हम कुछ धंधा ही नहीं कर रहे जिंदगी। बट यू डोंट रियलाइज कि अगर आपने वो आपके 80%, 70% अगर आपने कस्टमर्स जो आपको ऑनेस्टली हार्डली कुछ खाने को देते हैं, अगर आपने वो प्योरली बंद कर दिया, कल जाके उनको ना बोल दिया, जो आपके प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है जिसको आप फॉर एग्जांपल अगर 10 हफ्ते ले रहे हैं, 12 हफ्ते ले रहे हैं, 2 महीना ले रहे हैं, 3 महीना ले रहे हैं, अगर उसको 1 महीने में अगर आपने करना है तो आपके इन्वेंट्री टर्न्स और आपके कितने बढ़ जाएंगे। वेरी नाइस। सो आपने जो किया था एक बार, व्हाई डोंट यू रिपीट दैट? आपके पास पहले कितने कस्टमर्स थे, आपने कस्टमर्स कितने कम किए और उससे आपका प्रॉफिट या टर्नओवर कितना बढ़ा? सो गाइस, हम लोग बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूं ना कस्टमर बंद कर दो, क्लाइंट बंद कर दो, प्रोडक्ट बंद कर दो, और आप बोलते हो क्लाइंट तो बंद नहीं कर सकते, हाउ कैन यू स्विच ऑफ द क्लाइंट? मैं बोलता हूँ क्लाइंट से काम करना बंद कर दो, माल देना बंद कर दो। सो आपने क्या किया था? सर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम जैसे ही किसी को बोलते हैं ना कि हम रबर इंडस्ट्री में और ये पर्टिकुलर काम करते हैं, तो लोग बोलते हैं अच्छा ऑटोमोटिव में करते हो, बिकॉज ऑटोमोटिव इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर रबर कंपोनेंट्स। एंड वी से कि हम 1 रुपए का नहीं करते बिजनेस ऑटोमोटिव। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू एडिशन दैट यू कैन ब्रिंग। एन ऑटोमोटिव कस्टमर विल ट्रीट यू लाइक एनीबडी एल्स। आप नहीं दे रहे हो ये प्राइस में, मैं किसी और से ले लूँ। वी हैव जीरो बिजनेस इन द ऑटोमोटिव सेक्टर. And we had around 85 clients when we started out around 2019-20. Today we have around 67 active clients. So the number of कितने clients, कस्टमर थे? 85. Now we have 67. सो पहले 85 कस्टमर्स थे, टुडे यू हैव 65. Yeah. लेवल 1 में क्या किया था आपने, वो आप बताओ ना जरा। जब किसमें शुरू सर? में किया था आपने, शुरू में कितने कस्टमर कट करे थे? सर मतलब अराउंड 25. वो जो मतलब business is profit. We understood one thing very clearly: business is not revenue, business is profit. So जो profit दे रहा है, and अगर profitable भी है, but vis-a-vis time it is not worth it, उसको भी हमने कट कर दिया. So हम लॉस में तो बिजनेस कभी नहीं करते थे, बट अगर सपोज कोई 10-15 लाख का भी प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन वो मेरा खून चूस जाता है, मेरे को उसके 3 फोन ऑर्डर करने पड़ते हैं हफ्ते में, तो वी सेड के यार आप किसी और से ले लीजिए, वी विल रेफर यू टू समबडी एल्स, एंड वी respectfully hived them off. Jay will speak about this in a lot more elaborate way. So we started going to our customers. We clearly told them that see, we are unable to service. आप जो पैसा दे रहे हो हमको, जो जिस लेवल का आपको डिमांड चाहिए, we are unable to do it. So we put our hands and we said, sir, we are very sorry. हम तो आपसे काम नहीं कर पाएंगे. इसमें अभी 2 ही तरीके हैं. One is that, of course, you know, this is the price at which I am comfortable working with you. Second is, if you're not able to, you know, fulfill that, we will find you another very good quality supplier. And हमने काफी को वो करवाया भी है. But in maybe 70% of the cases, the customer has come back saying that, ठीक है सर, आपका जो प्राइस है वो कर लो, but आप काम शुरू कीजिए. So you have to understand, see, we are all coming from small family businesses, big family businesses, medium family businesses. One of my multinational customers told Darshan, he explained to Darshan, he's like, you cannot imagine how much we go through in terms of negotiation. हमको अगर आपको चूज के खाली कर देना है ना, हम वो 10 मिनट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ये काम है डेली इन एंड आउट. हम यही सीखते हैं कि हमारे सप्लायर पे हम कितना उनका खून पसीना हम चूज के सबसे लो प्राइस में हम उनसे काम करवा सकते. So then we said कि यार ये गेम तो मुझे खेलना ही नहीं है. And it was मतलब again in a very light-headed tone. So we started understanding. Darshan, as I said, you know, I'm single. I keep going for all these hundreds of arranged marriage meetups and all of that. And I started realizing सब में यार बात तो वही हो रही है कि इसके माँ बाप कैसे हैं, इनका परवरिश कैसे हुआ है. I said, so we started doing that with the customers also. Where are they serving? Who are they serving? ये किस टाइप के customers के साथ काम करते हैं, किस market में ये काम कर रहे हैं. We started looking after all of that. So that is when, as if you remember, Darshan had also given the same example. Okay, today Mahindra, Tata, they are not my ideal customer, even though they are 50,000 crore companies. For me, that is not a valuable customer.
बिकॉज उनका वहां पे काम डोमेस्टिक है, हमारा उसमें कंपटीशन डोमेस्टिक है. So we rather work with a company where I'm competing in the export market or I'm competing with importers. And we did that sort of differentiation where we reached that point. Today, customers come to us saying that we burnt our hands at a couple of places. We've realized that this is Harkesh Rubber is where everybody has been referring us to. We want to work with you. And when that happens, price is never a question. It's never a discussion. Is your product competitive? Is your product a commodity item in the general market? As in your competition, Sir, Daimler doesn't. O-ring, rubber के O-rings बनाते हैं हम, rubber के diaphragms बनाते हैं, rubber molded rubber components. If you Google, there might be over 50,000 rubber companies in India. तो मतलब आप रबर के कंपोनेंट्स बना रहे हो, मतलब O-ring बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेजर मतलब is nothing correct. मगर रबर O-ring मतलब आपके चश्मे में है, आपके घड़ी में है, आपके बुक शेल्फ में रबर O-ring लगा होगा, गाड़ियों में लगा है. एवरी मैकेनिकल और एनी ऑब्जेक्ट हैज अ रबर O-ring. इट इज द मोस्ट कॉमन सीलिंग एलिमेंट इन रबर. तो और ये इस पे आपने मतलब इस पे आपने आप डिस्काउंट्स नहीं देते? डिस्काउंट की तो सर बात ही नहीं है. डिस्काउंट कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ सर आप यू टेक अ डिसीजन टुडे और एल्स माय प्राइस इज गोइंग टू बी डिफरेंट टुमारो. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब आप बात ही नहीं करते डिस्काउंट? डिस्काउंट की क्या बात होगी? व्हाट इज द पॉइंट? पहले आप ऑफेंसिव इफ समबडी सेज डिस्काउंट. पहले आप क्या पहले देते थे? सर पहले से डिस्काउंट क्या मतलब कस्टमर ही बोलता था ये प्राइस में ओके, हम कस्टमर का ही प्राइस एक्सेप्ट कर लेते थे. अब हमारा मंथली कंपनी वाइज तो प्रॉफिटेबिलिटी खैर एक्सपेक्टेड ही है. वी हैव कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, वी हैव रीजन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, वी हैव प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी. एंड नॉट जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन अलग, प्रॉफिटेबिलिटी अलग, with visibility of how much business has been generated or is expected. मतलब किस कस्टमर पे अपना दिमाग चलना चाहिए ना, उसमें हम बहुत क्लियर है, क्योंकि वी ऑल हैव अ लिमिटेड बैंडविड्थ. हम 50 भी बहुत हो गया एक्चुअली. एक आदमी 50 कस्टमर से ज्यादा दिमाग में नहीं रख सकता. वी वांट टू मेक श्योर कि दैट इज वेरी लिमिटेड. तो आपने जो आपने बीच में बोला था कि हमने अपने कस्टमर को मैप कर रखा है, वो क्या था? So today, if we are, say for example, as Darshan said, if today, आज मैं महिंद्रा, टाटा किसी से काम कर रहा हूँ, if they are selling, to the local industry, तो मतलब by naturally they will have to have extremely low prices, which comes down to having extremely low cost. But today, when we work with a customer, we try and see कि वो कहाँ पे बेच रहा है, because at the end of the day, we are tier 2, tier 3 suppliers. रबर O-ring मेरा कस्टमर नहीं बेचता. मेरे कस्टमर कोई पार्ट बनाता है, कोई असेंबली होगा उनका. से फॉर एग्जांपल एक वाल्व ले लेते हैं, तो वो वाल्व में हमारे रबर के पार्ट्स लगते हैं. अभी वो वाल्व कहाँ पे बेच रहा है, हम ये मैप करते हैं. बिकॉज वी नो कि अगर यार वो वाल्व अगर वो इंडिया में बेच रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, जहाँ पे वो कुछ भी कर लो, मैं उसको फ्री में दे दूंगा, वो बोलेगा नहीं यार 10% और मेरे को ऊपर से दे, बिकॉज प्राइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फैक्ट. But if that valve is being supplied to, say, in Europe, in US, Canada, कोई भी ऐसे value added जगह पे, तो we know कि he will not skimp on the quality of that product. तो आप अपने कस्टमर को स्टडी करके फिर कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हो? Yes. Our customer profiling is extremely strict. Nobody can come to me tomorrow and say कि अच्छा मैं 50 करोड़ का ऑर्डर दे रहा हूँ, आप कल से काम करना शुरू कीजिए. Sir, if you allow me to share, I'll show you an example. Please show us some of your sheets, region wise profitability, customers profiling, क्योंकि you have co-host rights. ये क्या? Guys, is this sounding interesting? Hello everybody. Sir, this is what we do on the left, our activities. This is who we sell to, component manufacturers and other rubber manufacturers abroad. They supply to these industries: refinery, aerospace, food processing, irrigation, earth moving, etc. और किसके वॉलेट से पैसा निकलता है तब वो इंडस्ट्री चलती है. सो कोई पेट्रोल डालता है तब रिफाइनरी को पैसा मिलता है, कोई एयरलाइन टिकट खरीदता है तब एरोस्पेस डिफेंस चलता है, कोई एक कोक खरीदता है तब फूड प्रोसेसिंग को मिलता है. सो वी हैव मैप्ड दिस एंटायर थिंग. So ये टारगेट मार्केट बना लिया आपने? Correct. This is how we mapped, and we
ट्रैक की किस कस्टमर पे या किस इंडस्ट्री पे कितना फोकस रखना है. जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे वी हैव अ ह्यूज फॉर एग्जांपल राइट नाउ अ डिपेंडेंस, so we want to slowly reduce that. But if for example आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमोटिव इज नॉट हियर बिकॉज वी रियलाइज कि ऑटोमोटिव में वो 16 लाख की गाड़ी बिकती है एक शोरूम, वो कार कंपनी को 9 लाख रुपया मिलता है, या सॉरी ऑन रोड. So there's a huge difference. So based on which industry what is critical, and then we decide कि किस इंडस्ट्री में घुसना है, किस में नहीं घुसना. तो आपने कस्टमर मैप किया, कस्टमर्स कस्टमर मैप करा और कस्टमर्स कस्टमर्स कंज्यूमर मैप कर दिया, मतलब कस्टमर्स Correct. कस्टमर्स कस्टमर आपने 3 लेवल तक मैप कर दिया. Yes sir, yes sir. वाओ, वेरी नाइस. So that if that industry stops working, I know कि भाई there is no point in going after that customer, and you know, if that goes to fluctuations, तो उस पे ध्यान नहीं देना है. वेरी गुड. तो आपने शुरू में जब आपने कस्टमर कम करने शुरू किए थे फर्स्ट लेवल पे, तो हाउ मेनी फ्रॉम कितने कस्टमर से कितने कस्टमर पे आए थे और उससे आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा था? सर एटलीस्ट 15-20 कस्टमर्स तो हमने कम किए थे अप्रोक्सीमेटली. प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर वी वुड हैव इंक्रीज्ड बाय एटलीस्ट 50%. देयर वर टू क्राइटेरियाज, हाउ मच मनी डू वी मेक विद द कस्टमर एंड हाउ मच टाइम डज दैट कस्टमर टेक ऑफ आवर कंपनी एज अ होल. सो हमारा टाइम या हमारे रिसोर्सेज का टाइम, अगर हमारे टीम का भी वो टाइम खाते रहता है, and you know, the profit that he gives in exchange is not sufficient, we dropped it. तो आप टीम भी खाली बैठी रहेगी तो सोचेगी कि सर इस कस्टमर के पास जाते हैं, इसको मैं बेटर सर्विस दे देता हूँ. जो डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया मैंने नए कस्टमर बिना ऐड किए पुराने कस्टमर उड़ा दूं? Absolutely sir, 100%. मतलब I'm just saying, if you have that option without, मतलब if you feel that you cannot add another customer, by just virtue of cutting down your lead times, मतलब it must be, think about it, मैं कितना arrogant होऊंगा अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि सीमेंट सिर्फ एक हरकिश रबर से खरीदता है. So the moment that we go and tell them, see, today they decide how much they want to give us in terms of orders based on our lead time. अगर वो उनको 50 लाख पार्ट्स चाहिए जिसको मुझे, मतलब मैं उसमें से सिर्फ 10 लाख उसको बना के दे सकता हूँ, वो 10 लाख ही खरीदेंगे. बट एम आई दैट एरोगेंट टू फील के सीमेंट अकेले ही घर के शबर से लेता है? नहीं. So as soon as we cut down on the number of customers that we had who were taking up too much of our production time, lead time in general, we were able to service our existing customers alone a lot faster, जिससे हमारे टर्न्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं वही कस्टमर्स के साथ, इन मेनी केसेस वही प्रोडक्ट के साथ, एंड उसमें एक डबल मतलब बेनिफिट हो गया. So as soon as we started doing that, customers are like, अरे यार ये भी एक मेरा प्रोडक्ट है रबर का, मुझे बहुत टाइम लग रहा है उसमें. मैं अभी यूएस जाके आया, माय कस्टमर इज लाइक, यार माय सप्लायर इज 6 miles away from me, मैंने उसको लास्ट नवंबर में ऑर्डर दिया था, मैंने आज तक एक पार्ट नहीं दी. उसके पहले आप 2 बार मुझे मिलके आ चुके हो, पार्ट तो कब का डेवलप हो चुका. So we started realizing the pain points of our customers. See, you have to understand, people buy with emotion, फिर वो justify करेंगे लॉजिक. हमारी इंडस्ट्री में तो वेरी स्पेसिफिकली ये होता है, बिकॉज हमको पता है वो अगर वैल्व लाख रुपए में बेच रहे हैं, हमारे रबर के पार्ट्स में भी 2-2.5 हजार के भी नहीं होंगे. बट अगर वो रबर पार्ट फेल हो गए तो वो उसका वैल्व फेल हो जाएगा. ये स्टोरी मैं उसको रोज सुनाता हूँ. फिर मैं कस्टमर को पूछता हूँ कि यार अगर आपने 50% भी बचा लिया मेरे रबर के पार्ट्स में, तो आपके तो पूरे मतलब बिल ऑफ मटेरियल में तो आपको तो 10% का भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप क्यों ये सब चिंदीगिरी कर रहे हो? So you show him a lot of value. Absolutely, and we are committed. मतलब guarantee is, so if you have an absolutely incredible offer with unbeatable guarantee, we have often done that. मतलब customer अगर ना खुश हो, Apple के जैसा, we follow Apple. So मतलब mimic good companies and good practices. So we do that. Apple does that. Apple का कोई भी product warranty के time पे अगर खराब हो गया, no questions asked, 5 minutes में over the counter they will replace it with you. No questions asked. We do the same with our customer. Customer ने जो drawing और जो दिया है उसके basis पे, if any of my consignments do not fall into that, we will replace it, no questions asked, free of cost. And then the customer is like, boss, मेरे को इनसे काम करने के लिए मेरे को प्रॉब्लम ही क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं.
So why can't I work with और them? अब हाँ हमारे से गलती होगी तो हम we will take full responsibility for it and that is fair enough. We Very want to nice. get zero risk. और सर आपने जो customer drop करने वाली बात बोली, I'm sure you will also agree. We are the average of 5 people we spend the most time with, right? The same is true for our company also. So if you work with the right customers, the right vendors, the company level gets elevated. If you work with चलो ठीक है इससे भी काम कर लेता हूँ अभी तो वो आपके कंपनी का लेवल ड्रॉप कर दे जाता है. Very nice. Are you tracking the time consumed by clients and the resources that the client consumes? We are internally मतलब it's not something that we've developed a system because वो उतना जरूरी नहीं है but basically जिसका ज्यादा production time लग रहा है वो ज्यादा profitable होना चाहिए. The other big area that we consumes a lot of our resources is new product development. So we track के new product development होने के बाद कितने customers production में transfer हो गए और उनका क्या profits है. So if there is a customer, जैसे अभी I realized one of our customers in Hyderabad, it's a domestic customer. उन NPD new product development कराया जाता है 10 product हो गए 3 साल में एक भी has not converted into production. So I'm going to pick up the phone and tell him के यार this is not working because it is taking up too much of my time. Next time you have a new product development, please don't call me, speak to somebody else. नहीं and sir, when we keep talking about profitability, I also want to be very clear. ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत arrogantly कुछ भी charge करते हैं. It is really not like that. What we have picked and we've chosen is that for my export customers, they are importing from us. So the competition there is local. उनके लिए. So today often हमारे export customers हमको आके पूछते हैं हम price देते हैं उसके बाद कि यार are you sure about this price? Because हम तो अभी मतलब 70-80% ज़्यादा दे रहे हैं. So the difference is here I'm competing domestically with other rubber manufacturers. And when I'm going to say Europe or US, Canada, which is some of our biggest markets, वहाँ पे मैं उनके local rubber manufacturer से मैं compete कर रहा हूँ. And that makes a monumental difference. So we've realized that is our amusement park. We've realized that we give them more quality, we give them better service, we give them faster service with the exact same machinery, with the exact same requirements, but at a fraction of the cost. And that is after paying a premium. हमारे नजरिए से देखे तो. Very So nice. it's not that we charge arrogantly or anything. So what are the things you track? What are the systems you've created? Darshan, customer profile में sheet है ना. वो दिखाया. So sir, we basically track that one, where is, as I said, so where is our customer base? What industries are they serving? उसमें bare minimum हमारा per customer इतना एक product का value होना चाहिए. If that is there, all of this works, then our sales team gets the approval कि okay, now you can start, working with these guys, at least production or prototyping ये वो सब आप शुरू कर सकते हो. But we have a minimum order value, product wise, customer wise, also region specific, and industry specific. So these we have some, gatekeepers in that sense. And we Great. track that customer wise. Any sheets you'd like to share with us? Because I'm sorry, guys, I just picked them. I picked up Jay and Darshan in the morning. सुबह फोन करके मैंने बोला आजा 15 मिनट के लिए ऐसी शेयरिंग कर ले टाइम पास मतलब in the sense just share with us that give us the confidence that yes we can drop customers, we can drop clients. हमने अगर कस्टमर ड्रॉप भी कर दिया without increasing a single customer, मतलब आपने पहले 90 कस्टमर्स होते थे और 4 करोड़ का टर्नओवर होता था ना. यस सर. और अभी आपके पहले 90 कस्टमर के साथ 4 करोड़ का टर्नओवर था, अब 60 कस्टमर के साथ 19 करोड़ का टर्नओवर हुआ, which is about 5x. Yes sir, correct. The 5x growth with about 20% lesser customers. Sir, ये मेरे पास incomplete वाला है. My team will have the completed one. But basically any new company that we get, we track कि भाई वो किस इंडस्ट्री में सप्लाई कर रहा है, वो डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहा है या एक्सपोर्ट में कर रहा है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका टीम साइज कितना, उसका मेरा पोटेंशियल ऑफ बिजनेस विद दैट कंपनी इज हाउ मच, what is the primary reason why they would choose to work with us. Is it material, is it know-how, is it price, etc. The secondary here is price, for example.
बट प्राइमरी में अगर प्राइस निकला तो वो हमारा आइडियल कस्टमर है ही नहीं. मेरा कंपटीशन आज वो कहाँ से खरीद रहा है? So even if it is a company based in Bombay, Bangalore, Pune, somewhere, but currently is he purchasing that same component from abroad or from India? And is it an MNC or an Indian, etc., etc.? So these are some of the broad things, matlab, that we check, and then it goes deeper and deeper into identifying the people in that company, who is the champion, who is the decision maker, who is the एक मिनट, आप ये सब करते हो? एक मिनट ऊपर जाना. हाँ बहुत सर. डिटेल में करते हैं सर. ये सब शीट भरी हुई है आपकी? Yes, sir. हाँ सर, भरी हुई है, मतलब बट आई डोंट हैव इट ऑफ हैंड. ऊपर जाना, ऊपर जाना. हाँ सर. फर्स्ट इसको जरा जूम इन कर लो थोड़ा. ये दिख रहा है? ओके, आप ये करते हो कि मार्केटिंग टेक स्टैक, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज, चैंपियन जॉब रोल. चैंपियन जॉब रोल क्या होता है? चैंपियन जॉब रोल इज समबडी हु वांट्स अस टू बी सक्सेसफुल. सो उन लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद हर कंपनी में अलग अलग टाइप के रोल होते हैं. सो हु इज द वन हु इज गोइंग टू चैंपियन द कॉज ऑफ हरकेश रबर इन दैट कस्टमर्स प्रेमाइसेस, दैट विल बी द चैंपियन. तो वो हमारा जो चैंपियन है, उसकी Correct. उम्र क्या है, उसके गोल्स क्या है, कंसर्न्स, ऑब्जेक्शंस ड्यूरिंग सेल्स प्रोसेस, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजन, स्टेज व्हेन जॉइनिंग द सेल्स प्रोसेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, डिसीजन मेकर, एज, गोल्स, कंसर्न्स. तो डिसीजन मेकर कौन है, चैंपियन कौन है? नीचे जाना. इन्फ्लुएंसर कौन है, ब्लॉकर कौन है जो आपको रोकेगा? करेक्ट. So मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर. We are into industrial engineering. So we primarily work with 3 different departments: purchase department, engineering and operations department, and quality and sustainability department. So purchase department, for example, is only a gate opener for us. वो सिर्फ engineering department को बोल सकता है मेरे पास ये एक vendor है, अगर हमको तकलीफ है तो आप इसको evaluate करो. तो my pitch to him has to be completely different, because he has to I have to make sure that he doesn't get embarrassed tomorrow. उसको कल ऐसी सिचुएशन में ना होना चाहिए कि अरे मैंने हरकेश रबर को इंट्रोड्यूस कर दिया और ये लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे अगर हरकेश रबर डिलीवर ना करे. तो मुझे उसको सहलाना है, सिक्योर फील करवाना है, सेफ फील करवाना है, एक छोटे बच्चे की तरह. अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फिर मैं बात कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिपार्टमेंट को मुझे मेरा कॉम्पिटेंस दिखाना है. तो कुछ अलग अलग बनती है डिपार्टमेंट वाइज. Yes sir. So because engineering department wants to know what systems you have, who are you working with, how will you ensure a right delivery and quality of product, you know, how things are going to flow, testimonials, etc., etc. And he is the primary decision maker, matlab engineering department. And the quality department is a blocker. क्वालिटी डिपार्टमेंट सिर्फ यही देखने के लिए आता है सब ठीक ठाक है कि नहीं. अगर उसने ऑडिट करके रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये इनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, तो वो एक रेड स्टैम्प लगा सकता है और सब काम रुक जाएगा. तो क्वालिटी को मुझे अगेन आई हैव टू मेक श्योर कि माय क्वालिटी टीम अंडरस्टैंड्स दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ क्वालिटी, एंड वी हैव टू उसको थोड़ा सा चढ़ा के रखना है. नहीं आप बहुत बढ़िया हो. क्वालिटी वाला अगर बिना एनसी के चले जाएगा तो उसने अपना काम ही नहीं किया ना ठीक से. तो मेक श्योर कि देयर इज सम grievances that he expresses which are fixable and his ego is massaged, and then make sure कि भाई business still flows through. Very good. How do you map for profitability? ये मेरे को भेजना जरा. Sure sir, I'll send it. इसका जरा फर्स्ट कॉलम Okay. व्हाट्सएप कर देना. Done sir, I'll do that. प्रॉफिटेबिलिटी तो सर सिंपल है. मतलब वो सेटअप किए हुए हैं कॉस्ट सेंटर्स टैली के अंदर. वो हो जाता है कि कोई भी रॉ मटेरियल इन्वर्ट आता है वो जॉब ऑर्डर के साथ लिंक्ड है. ठीक है. ओके, सो अब सब सचिन ये पूछ रहा है कि अगर हमको ड्रॉप करने कस्टमर्स तो एसएसजी में क्या फर्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए? नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर इमीडिएटली. पैसा नहीं दे रहा है, बिजनेस है प्रॉफिट्स के लिए. वो तो यार गोल्ड राइट जीपी बोल बोल के थक गए. मेक मोर एंड मोर मनी, दैट्स द. वो थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है भाई. अच्छा वो देखो मेरी जीपी है 30%. हाँ. अब ना एक कस्टमर है जो 5% देता है जीपी. हाँ. अभी जैसे मनप्रीत ने लिखा कि कैश फ्लो चल रहा है ना मेरा, उसकी वजह से बैंडविड्थ भी तो जा रही है ना. कैश फ्लो का लिमिटेशन कहाँ पे है? आपका टाइम जा रहा है ना, आपके टीम का टाइम जा रहा है. बिकॉज आप वो 5% वाले से बात कर रहे हो, आप 30% वाले को ढूंढ नहीं रहे. नहीं तो भाई 5% तो देके जा रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है. वही तो बता रहा हूँ ना कि वो 5% वाला है और उसको सर्विस करने में टाइम जा रहा है, इसीलिए आप 60% वाला ढूंढ नहीं रहे ना. सर आपके पास लिमिटेड टाइम है.
अगर आप यही 5% वाले के साथ काम करके आप अगर उसमें धुले हुए हो, तो फिर आप ढूंढोगे ही नहीं ना दूसरे कस्टमर को, बिकॉज आप दूसरे कस्टमर तभी ढूंढोगे जब भी आपको लग रहा है कि यार मेरा मशीन खाली पड़ा है। यू नॉट, मतलब आपके पास वो क्या बोलते हैं, नो फायर इन यू टू गो एंड फाइंड अनदर प्रॉफिटेबल कस्टमर, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरी मशीन चल रही है 24 घंटा में, और कहाँ से इसमें ऐड करूंगा, ऐड करने के लिए मेरे को नया फैक्ट्री डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जेब से पैसा तो किसी के उसमें से नहीं निकलता। So The as other soon thing as you that can do happens, is, yeah, sorry, go ahead, go ahead. no, that's what I was trying to say. अगर कि मेरे जब पास तक 30, सपोज मैं जीपी 30% पे काम कर रहा हूं, तो आर यू सेइंग कि 10% से कम वाले सबको काट देना चाहिए मेरे को? Absolutely, मतलब immediately, क्योंकि क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या फर्क पड़ेगा, एक बार कैलकुलेट कर लो ना। अगर 30% एवरेज चल रहा है और 10% वाले को ड्रॉप कर लेते हो, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? ओवरऑल में 10% से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो 10% से अगर आपकी 30% की बैंडविड्थ फ्री होती है, तो कैन यू फाइंड अ न्यू कस्टमर? एब्सोल्युटली, आई एम श्योर। एंड टेक अ पोल विद योर एग्जिस्टिंग कस्टमर फेसिंग टीम, आपके सीआरएम, ऑपरेशंस, क्वालिटी डिपार्टमेंट का पोल ले लो, which are the 5 most difficult customers that you find. Take those 5 customers के names, and if they are profitable, say कि यार ये तो करना पड़ेगा, ये हमारा अन्नदाता है। और अगर वो प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है, वो अंडर 10% है, और वो उस लिस्ट में आ रहा है जहां पे आपकी टीम परेशान है, तो काट दो उसको। सर एक चीज तो क्लियर है, आई मीन इफ यू आर इन द बिजनेस, यू डू बिजनेस फॉर बिजनेस, नहीं तो आप एनजीओ चलाओ। एक तो इमोशंस हैव टू बी आउट ऑफ इट। ऑफन वी कम अक्रॉस कि नहीं यार ये मेरा पुराना कस्टमर, मेरा ये है, मेरा वो है। ठीक है, पुराना कस्टमर है, आप ही क्यों उसको सर्व कर रहे हैं? वो भी आपको सर्व करना चाहिए। उसको बोलो यार मेरे को ये प्राइस है, मेरे को तो ये परवड़ ही नहीं रहा है। रिलेशन के लिए काम कर रहे हो तो एनजीओ चला लो, बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो बिजनेस करो। And there are a couple of things you can do. One, as you said, of course, go back to those customers humbly and respectfully. Of course, that is without doubt. वो Go and पंकज tell them कि सर, हाँ मेरा पंकज पूछ रहा है कि भाई साइक्लिक इंडस्ट्री है, कि भाई कभी कम पैसा कमाते उससे, बट हो सकता है कल को ज्यादा धंधा दे दे। I'll answer that, sir. He's right. So strategic calls we take. So we don't do business in loss. मतलब that has to turn out to be profitable tomorrow के लिए, profitable today is also necessary. Maybe margin might be lower. अगर कस्टमर 100 प्रोडक्ट मांग रहा है, 100 प्रोडक्ट में से लेट से मेरे को उसको 30 नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं क्योंकि उसको एक बास्केट चाहिए, तो क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम नहीं करते बास्केट नहीं चाहिए, ये सब मिथ है। वो खाली आपसे, इट इज अ नेगोशिएशन टैक्टिक। यू हैव टू गो टू द लाइन आइटम। Every product has to be profitable, every customer has to be profitable. If it is not profitable, you go back and show him the numbers that this is not profitable. So he can't force you to do it. The first thing is you go and you go back to the customer, you tell them that this price is not feasible for us, this is my revised price. In majority of the cases, the customer, if you have served them really, really well, they are happy with you, quality department is happy, engineering has no complaints, they will definitely agree to that price. अगेन दिस बॉइल्स डाउन टू आप किस तरीके के लोगों से काम करते हैं। अभी हमारे केस में इंजीनियरिंग ने अगर बोल दिया ना कि मेरे को हर के ऊपर से काम करना है, परचेज वाला कुछ भी कर ले, देयर इज नो वे दैट दे विल नॉट वर्क विद अस, बिकॉज इंजीनियरिंग नोस के मुझे 50 रुपए छोड़ो, मेरे को कोई 25 रुपए में भी मिलेगा, कोई 10 रुपए में भी मिलेगा, बट दैट इज गोइंग टू गिव मी बिगर प्रॉब्लम. So one, obviously customer profiling is very, very important, and yes, as Pankaj said, we also do that. When we see, say for example, Siemens, मेरे को एक overnight तो कोई कस्टमर 50 करोड़ का ऑर्डर देगा नहीं, which is why that mapping, if you guys saw clearly, we define what is the size of my customer, what is our potential revenue. आज भले 10 रुपए का बिजनेस दे रहा है, बट वो आज के जमाने में वो 200 करोड़ का रबर का पार्ट ले रहा है, ओके, देन वी कैन वर्क विद दैट. ओवरनाइट तो वो शिफ्ट नहीं करेगा. चलो जी, चलो, वेरी नाइस, एक्सीलेंट गाइस, दैट इज रियली 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 गुड. ओके गाइस, सो अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, तो कैन वी ऑल थैंक Darshan and Jay if you liked what they shared. And Thank you. I have one question. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful sharing. Great Thanks, hearing Darshan and Jay. you. As usual, great hearing you guys. Bye. Thank you, Jay. Thank you. Most Thank you. welcome. Thank you everyone. Thank you so much. really nice, really, really, really nice. Thank you so much, and thank you so much, Jay and Darshan, for coming at such short notice.
मैंने 8:30-9 बजे तुम्हारे को फोन किया कि भाई आ जाओ आज, और you guys said okay, let's do it. Thank you so much for giving us a context and showing us a different world. Thanks a lot for joining us, both of you. Thank you. Always, always. Thank you. Somebody had वो one बोलते हैं ना, question. जब हम बीएमपी कर रहे थे तो हमारे सपने होते थे कि कभी एक दिन आके हम ऐसे बात करेंगे, तो Very हमारे good. भी सपने पूरे हो सकते हैं. You guys can also be at it. Very good. एक दिन अभी मैं call you for the BMP sharing. उसमें बड़े मजे आते हैं. उसमें Hi तो Darshan. Yeah. Good to see you again. Oh, hi Rahul. Good to see you. Somebody had a question. I don't know if they're still around. Somebody had a question. If you want us to take Yeah, that, yeah. otherwise we are I happy to. had this question: the potential revenue you see over what period? 1 year, 3 year, 5 year? Annual. Annual. But this is what they are buying. They are not. It's not going to fluctuate overnight. इतना ज़्यादा तो नहीं होगा. And as I said, so we look at MNCs and certain big scale companies. So we know that this is what they are buying on an average every single year. That is how we map it. Okay. very good. Thank you. Thanks, Darshan. Okay. Thank you, sir. Thank you. Really nice. Bye. Thank you. All Thank the you. best, guys. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.